literal meaning, right? It's not comprehensive meaning, it is a literal meaning. And I said morality, 1 minute. Morality is different for different person. For example, I'm giving you morality, you know, for a woman in a very modern, educated English, English, Indian family, English educated family, right? Where parda partha would be not a moral, right? It would be immoral to have a parda partha system. Fine? Yes, sir. But in a Muslim family, which is an Orthodox Muslim family, parda partha is a morally correct, right? It is moral to have a parda. Yes. So the morality, yes, morality changes as per time and circumstances. The first source of morality is religion, right? Then custom, then a value, belief. Got the point? Yes, sir. So it's not, morality for me would be the same for you. For you, morality may be different. If your religion, custom, belief, behavior, attitude are different from mine. Yes. Okay? Ethics is a broader term, very value-laden term. Ethics is a morally correct. Then here we can have a debate on what is ethical, right? If me and you are in certain circumstances, what kind of action would be an ethical action, right? So ethical is very much related to the state, especially जब मान लीजिए आप एक bureaucrat बनेंगे and you'll have a situation when there'll be communal rights, right? And in society there are big mafia leaders, right? And there are religious baba, right? And then you, and then your leader, masters, I mean to chief ministers, then the home ministers of that state, and then you have to also follow your senior, the immediate senior, isn't it? Yes. Or super senior. In that circumstances, what kind of action would you do that would be ethical? That ethical dilemma. Several times it comes ethical dilemma ki kya kare? Is position kya kare? Yes, go ahead. But I'm saying that means that should be ethics, means that should be correct for majority of persons. You can say that. Ethics में अगर कोई आप ethical dilemma है तो you'll find that कि क्या action लेना चाहिए, and that action should be just, fair and reasonable. Yes. Got the point? Yes, sir. This man who Machiavelli talks about dual morality. Machiavelli talks about dual morality. What is dual morality? Morality for a common people. Morality for a king. Yes, and morality for a state. Morality for state or the prince. Right. So from something might be immoral for common people, but that is not mean that would be also immoral for the prince, like fraud. Right. So he advising prince, you just achieve your ends, right? Whatever means you may use. Okay. Yes, sir. Okay. So we were doing cultural nationalism, and I think cultural nationalism हमने पूरा कर लिया था, right? Yes.
And then I talked about what is the threat of cultural nationalism in India, not only in India, anywhere of the world. So Indian cultural nationalism is basically influenced by, somehow the Indian religious text like Vedas, especially Vedas or Vedanta, and German nationalism, right? What German nationalism said: one religion, one language, one culture, one shared, history. Fine. Yes, So sir. Nazi nationalism. Nazi. Who was Nazi? No, no, Nazi. Yes, yes. I heard this. Hitler. Have you heard of Hitler? Yes, yes, Right. So he was the head of the Nazi forces, right? yes, yes. And their nationalism was also cultural nationalism. Have you heard of Aryan race? Yes, sir. Okay, so Hitler used to say that we belong to Aryan race and we are superior, right? What do you mean by superior? Superior means culturally superior. We are more fittest, right? We can fight any war and we can survive, right? The Germany would be a great Germany again, right? So it was Hitler who had given the formula Germans first. Right. Okay, sir. So if you look at the Indian nationalism, especially the cultural nationalism that was influenced by the Nazi culture, especially the nationalism that is spreaded by the Rashtriya Swayamsevak Sangh. Have you heard of RSS? Yes, sir. Yeah. So the RSS, the Rashtriya Swayamsevak Sangh, have you seen a dress? Dress, क्या yes. ड्रेस क्या था? सर वो जो ये आर्मी जो कलर होता है उससे लाइट वाले जो कलर होता है उसकी शॉर्ट्स होती है और ओके, हाँ. और ऊपर जो है वो हाफ हाफ शॉर्ट टाइप की जो होता है राइट. सो इसका हाफ पेंट होता है हाफ पैंट है और शर्ट होता है, राइट? यस And they do like this. Can you see me? नो No, you can't see me. Okay, now can you see me? या Yeah. So they on the यस chest they keep their their hand, right? यस This half knicker was borrowed from that is Nazi forces. Half knicker and the khaki shirt. काफी हाँ ये वर्ड याद Yes, नहीं this khaki shirt and khaki half pant, they borrowed dress from Nazi forces, आया ओके right? And the German used to do like this. Can you see me? यस यस Yeah. So they used to see there. ऑफलाइन का बहुत ही फायदा है, ऑनलाइन का भी बहुत फायदा है. शायद ऑफलाइन होता तो शायद हमारी क्लास आज नहीं होती, क्योंकि आप भी थके होते, कुछ स्टूडेंट घर चुक गया होता है ना. बट ऑनलाइन का क्लास है कि हमारी क्लास हो पा रही है. बट ऑनलाइन में ये है कि हम आपको बॉडी से बहुत कुछ बता सकते थे, लेकिन वो नहीं होता है. देयर इज अ लिमिटेशंस, राइट? बॉडी लैंग्वेज आल्सो. यस. अब सर ऑफलाइन क्लास होती तो उसका दूर भी आना पड़ता राइट. बट उसका एक अपना जॉय है ऑफलाइन क्लास के. टीचर इज नॉट ओनली टीचिंग थ्रू द वर्ड्स, they are teaching through the body language, right? Yeah. Right. So anyway, so the cultural nationalism, that Aurobindo Ghosh has proposed, and then after that, Aurobindo Ghosh, not before Aurobindo Ghosh, you said Swami Dayanand Saraswati, Lal Bal Pal, Tilak, and after that, the Savarkar, right? Yes. So they proposed cultural nationalism.
right? Have you heard of Savarkar Hindutva? Savarkar brothers. Yes. Hindutva? Brother. I have heard Hindutva, not Savarkar Hindutva. Okay, so no, that Hindutva is proposed by Savarkar. Savarkar wrote a Okay. piece in 1937. His name was B.D. Savarkar. सावरकर ब्रदर्स थे ना, ये एक और थे इनके पास। नहीं, वो चापेलकर ब्रदर थे, जिसको ब्रदर के बारे में आपको ध्यान में आ रहा है। ये ही वाज B.D. सावरकर। सावरकर चापेलकर बंधु थे वो, that was चापेलकर brother, that was different. He was B.D. Savarkar, you know, he was a freedom fighter. He went to England to study, and then, you know, he came to India and involved in militant movement, and then he put to jail in कहाँ पर, श्रीलंका के पास जो हमारा द्वीप है, अंडमान, right? And in Andaman he wrote many texts. When he came out, then he wrote Hindutva, 1937. And he said that Hinduism is a way of life, you know, Hinduism is a, you know, spring from Sanatan Dharma, right? Have you heard of Sanatana? Yes. Sanatan Dharma? You only told me that initially it was Sanatan and then Hindu right. Yes. So Hindu word ही नहीं था actually. So Sanatan Dharma, right? And he said Hindutva in India is a, you just write it down if you you know, B.D. Savarkar's idea of nationalism, or him, you know, Hindu nationalism. So B.D., should I dictate or will you write? You dictate. Okay. Note it down. The cultural nationalism of B.D. Savarkar. Yes, sir. Right. So B.D. Savarkar लिख करके आप heading दे दीजिए. Yes. Then I'll dictate and then you write. लिख दीजिए great freedom fighter. दूसरा पॉइंट लिखिए. Yes, sir. He called 1857 revolt as the first independence struggle of India. Right? Saint Andaman. Fine? Yes. Okay. Now come to more information about it. In 1937, in 1937, Savarkar became the president of Hindu Mahasabha. Yes, sir. Right? He wrote Yes, sir. Hindutva. Yes, sir.
Yes, sir. Yes. He said that he said that the source of Hindu religion is Sanatan Dharma. Source of Hindu religion is Sanatana Dharma, right? It is the oldest religion of the world. Fine? Yes, sir. Done? Yes, sir. Very good. He said that India is a Pitrabhumi, Pitra भूमि. पितृभूमि मतलब फादरलैंड. यहाँ पे लिख दीजिए फादरलैंड. यस. एंड पुण्य भूमि. पुण्य भूमि. पुण्य भूमि means source of oldest religion, that is Sanatan Dharma. Sanskrit is a classical language Sanskrit is a classical language he called India Hindustan. So ये word Hindustan use कर रहे हैं इंडिया ने. हिंदुस्तान जहां जहां पे मैंने इंडिया लिखा है उसको हिंदुस्तान कर दीजिए. इंडिया ब्रिटिश कहते थे हम. हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान. हिंदुस्तान is a land for all those who worship it as Pitrabhumi and Punyabhumi. Pitrabhumi and Punyabhumi. लिख लीजिए. That is our Done, sir. Done. एक लाइन लिख लीजिए. He was not considering Muslims and Christians as Indians because their Pitrabhumi and Punyabhumi was not related to the land of Sanatan Dharma. He was not considering Muslim and Christians as Indians, as a Hindustani. Okay. Because their Pitrabhumi or Punyabhumi belongs to the other land or not the land of Sanatan Dharma.
Yes, sir. Got the point? Yes, sir. So he was also propounder of cultural nationalism, right? So this if you see the cultural nationalism, the Muslim cultural nationalism was proposed by Sir Syed Ahmed Khan, then Iqbal, and then Jinnah, right? Yes, sir. Then Hindu nationalism was, proposed by extremist nationalists like Tilak, Ghosh, Lal Bal Pal, Savarkar, and Golwalkar. Got? Yes, sir. And in the South India, the Ramaswamy Naikar, alias he was called as Periyar. Alias bolte na urf ko, Yeah. he was called as Periyar. Right. Also, he spoke about Dravid Nadu on the basis of different culture that Dravid land have. Right. So Dravid, like different language, different race, different traditions. This cultural nationalism is very much against of India's unity and integrity. Not it though. This cultural nationalism Yes, sir. is very much threat to India's unity and integrity and cultural diversity and plurality of India. Got the point? Yes, sir. अच्छा, लिख लिया? Yes, sir. समझ में आया? कुछ नहीं आया तो बता दीजिए एक बार पढ़ के. लिखा तो सर ये है कि कल्चरल नेशनलिज्म एक तरीके से थ्रेट है Yes. यूनिटी और इंटीग्रिटी को. Yes, yes, yes. Why it is threat? Because when you take the one culture, one nation, then you see India is a multicultural society, right? And this cultural nationalism divided India into India and Pakistan. What was the basis of India's division? Tell me. यही था, उन लोगों को लगता था कि Religion. रिलीजन अलग है, इन लोगों को Yes. उनको साथ लग में रहा था कि हमारा अलग है क्योंकि हम दोनों अलग अलग भाषा बोलते हैं, हम अलग अलग धर्म के लोग हैं, और जब हम अलग अलग धर्म के लोग हैं तो हम अलग अलग दो सिविलाइजेशंस हैं. What is two nation theory of Jinnah? Do you know? थ्योरी तो नहीं पता सर. Two nation theory of Jinnah पता है? सर आई डोंट एग्जैक्टली नो कि थ्योरी क्या है, बट वो ये पता है कि क्योंकि उनको अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्योंकि हम लोगों मतलब दे स्टार्टेड फीलिंग दिस कि हम लोगों की मुस्लिम्स की इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है जितनी हिंदूज की है. No. Representation का इशू तो नहीं था. Actually, Muslim were proportionally represented. They believe that if India will be an independent state, so since there will be first past post the system, right? जब आप मतलब कि जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी वो जीत जाएगा, तो इस यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी होगी? हिंदुओं की होगी, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है तो उनका शासन रहेगा, हम हमेशा शासित रहेंगे. ठीक है, ये डर था, ये भय था. तो जिन्ना ने कहा कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू सिविलाइजेशन. राइट? यस सर. Hindu and Muslims are two civilizations. Their food culture is different, their faith is different, their living style is different,
you know, they can't sit and eat. Their marriage is different, you know, and their faith, especially faith, is different. So they are two nations, Hindu and Muslims, right? So we need a nation called Pakistan, right? Yes, sir. What was the Pakistan? Pakistan. Punjab, K से कश्मीर, के आई, S से सिंध, राइट। ऐसी ये है। करके ऐसी टेरिटरी था, देख लीजिएगा, कोई फुल फॉर्म गूगल पे मार लीजिएगा, राइट। बट द मेजर आइडिया इज the Jinnah considered Hindu and Muslim as a two civilization, right? When there is a two civilization, the two civilization cannot coexist each other. That their formula कि हिंदू मुस्लिम टू सिविलाइजेशंस हैं, टू रिलीजन है, उनका फेथ अलग है, उनका मैरिज अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनका पहनावा अलग है, बोली और भाषा अलग अलग है, तो एक देश कैसे हो सकते हैं? वी नीड अ सेपरेट नेशन कॉल्ड पाकिस्तान, राइट? Yes, sir. And that is the two nation theory. And their birth, the two, कहाँ पे हुआ था? सर सैयद अहमद खान के आइडिया में ही आ गया था. Got the point? Yes, sir. So this cultural nationalism divided India. Right? आप अभी को आपको पता है कि कल प्राइम मिनिस्टर गए थे कहां पर? परसों, 2-3 दिन पहले. The Indian Prime Minister has visited one our neighbor. No idea? Bangladesh. सर अभी 1-2 दिन से तो मैंने देखा नहीं. गए थे? ओके, न्यूज़पेपर नहीं देगा, कोई बात नहीं. And in Bangladesh, when he returned back, the Bangladeshi people are attacking Hindus and they're attacking temples. Why it is so? Do you know why? No, sir. Okay, we attacking, to whom we are attacking? By CAA, Citizenship Amendment Act. Muslim and Sri Lanka, Tamil. तमिल को तो नहीं दे रहे हैं, वो तो ठीक है, तमिल तो बात नहीं है. स्पेशली टारगेट इज मुस्लिम, राइट? हाँ, वो हटाए गए हैं ना, इन दोनों को हटा दो, मतलब ये रिलीजन नहीं लिए, मतलब ले गए हैं. अब श्रीलंका में क्या, सॉरी बांग्लादेश में क्या हो रहा है? रिएक्शंस, राइट? वहां पर भी जो कल्चरल नेशनलिस्ट है, दे आर नॉट सेकुलर, देयर अटैकर्स आर नॉट सेकुलर, दे आर आल्सो ऑर्थोडॉक्स, a cultural nationalist. So anywhere cultural nationalism is very much threat, because the society is plural. What Hitler did to the Jew, right, on the name of nationalism, cultural nationalism. Okay, got the point? Cultural nationalism is very much threat to democracy, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कल्चरल प्लुरलिटी, इस सब के लिए थ्रेट है. इसका मेरा कहने का ये मतलब था. गॉट द पॉइंट? यस सर. ओके, सो क्वेश्चन इस पे आ सकता है. ओके, क्वेश्चन दे दूं मैं? यस सर. ओके, do you think that cultural nationalism in India is a threat
to parliamentary democracy? थोड़ा सा analytical question होगा ये. Do you think that cultural nationalism in India is a threat to parliamentary democracy? Done? Yes, sir. Okay. Anything you want to ask? You want to tell? कुछ कहना है? Not yet, sir. I will once revise and then I will ask. Okay. No issue. Sir, have you checked those questions answers? Sorry? Sir, have you checked those answers? I checked already, but I will send you. मैं जब भी आता है तुरंत आंसर देखता हूँ immediately. कल भी एक आंसर भेजा था ना? Yes, sir. सर सैयद अहमद खां पे नहीं, सर सैयद अहमद खां पे था ये नहीं, अरविंदो पे था, अरविंदो पे था, राइट? नहीं सर, सर पे था, सर सैयद पे. कल नहीं, कल अरविंदो पे आए, अरविंदो हाँ. पे आंसर है तुम्हारे पास? Yes, yes, sir. Yes. Yes. Yes, Actually, sir, yes. के रखा हुआ था ना पहले से ही. Yes, yes. Good, good. So, are you making comprehensive notes? Yes, At sir. at one place? Yes. एक कॉपी में सबको बनाना है, right? Yes, sir. Good. I will send them also once I'll be done. Okay, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. If you send it, I'll be happy to see that also, your notes. Now come to the concept of Aurobindo's Swaraj. Cultural nationalism clear हो गया? Yes, sir. Okay. Now come to the concept of Swaraj. What is Swaraj? Swaraj. Swa means self, Raj means Rule. rule. The literal meaning is self-rule. Fine. Yes. Any confusion? No. I don't think there's a confusion. No. Swaraj means self-rule for anybody. So for Aurobindo, he said Swaraj is a necessary condition for freedom. Right? Self-rule is very much necessary for or to exercise freedom. Fine? Yes, sir. Okay. So Swaraj cannot be realized by only political freedom. So, okay, Swaraj is necessary for freedom, but it is not that only political freedom cannot bring Swaraj. But the resumption of India's role as a spiritual guide to mankind. अगर इंडिया अपना एक जो रोल है स्पिरिचुअल गाइडेंस का, स्पिरिचुअल पावर जो है इंडिया का, वो अगर इंडिया पूरे विश्व को सिखा पाए, that would be the real freedom. Got the point? Okay. Swaraj is not only political freedom. Political freedom is very important. He said political freedom, Swaraj means freedom. Self rule मतलब freedom. एक तो ये मतलब समझ लीजिए, ठीक है? और freedom मतलब political freedom and spiritual freedom. Okay? Yes, sir. So the Aurobindo says political freedom is not sufficient. India has to assume the role of a guide of spiritual freedom. India can teach spirituality to the world.
Are you getting my point? Yes, yes. Okay. So Swaraj is fulfilling of the ancient life. जो भारत का जो ancient life है, जो पौराणिक लाइफ है, जहां पर लोग सेल्फ सफिशिएंट रहते थे, ग्रीडी नहीं थे, लोग बस जरूरत की चीजें को यूज करते थे, राइट। और जो वहां पर जो शांति थी, पीस था, एक जस्टिस था, एक ऑर्डर था, राइट, दैट नीड्स टू बी रीएस्टैब्लिश्ड, right? And in the modern situation, India's role should be a like teacher, a guide, right? Right? Okay. So India has to says to the world, India को ये कहना पड़ेगा कि we are the spiritual power, and India's greatness, the national greatness, is return of सत्याग्रह। हमको कहना पड़ेगा, हमें वर्ल्ड को सिखाना पड़ेगा क्या? स्पिरिचुअल फ्रीडम, राइट। वी हैव टू फुलफिल, वी हैव टू we have to use the spiritual guidance in politics, the Vedantic ideal in politics. अगर हम राजनीति भी कर रहे हैं तो वहां पर भी हमें स्पिरिचुअल को साथ में रखना पड़ेगा। वेदांतिक आइडियल जो है वो पॉलिटिक्स में रखने पड़ेंगे। आइडिया, गॉट द आइडिया? Yes, sir. क्या है इनका? स्वराज बताएं। उन्होंने बोला सर Swaraj means this is self-rule, that means freedom, and freedom could be political and spiritual. So he Right. is saying कि ये जो स्वराज है ये हमें सिर्फ पॉलिटिकली फ्रीडम में नहीं चाहिए, ये बल्कि हमें इसलिए चाहिए ताकि हम अपने स्पिरिचुअलिटी को वापस से रिज्यूम कर सकें। Right. ये गाइड की तरह हमारे लिए काम करें, स्पिरिचुअल गाइड के लिए, ताकि Right. हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर था सोसाइटी में उसको रीगेन कर सकें। Exactly. So he said political freedom is not sufficient. Okay, we need to, or India need to resume a role of a teacher, a guide of a spiritual freedom, right? And India can teach to the mankind, right? Yes, sir. In the modern condition, the Vedantic ideals should be included in politics, right? Yes, sir. And that is the true meaning of his Swaraj. But he said political independence is prerequisite for Vedantic realization to the entire world. He said, okay, this is two kind of freedom. क्या है? Political and spiritual, but political is a priority for to go for the spiritual freedom, right? नहीं, देखो हम तो उस समय क्या थे, गुलाम थे ना अंग्रेज के, तो कहते हैं कि देखिए हम स्पिरिचुअल फ्रीडम को तो अगर डिसमिनेट भी करें तो इंग्लिश हमें आके, अंग्रेज आकर के हमें रोकेगा। तो हमें वी नीड फर्स्ट पॉलिटिकल फ्रीडम, देन इंडिया विल प्ले अ रोल ऑफ a spiritual guide to the mankind. And the day the India would be a Vishwa Guru, right? And via and through the spreading idea of the spirituality, right? Got the point? Yes. Little bit. तो मतलब बेसिकली ट्राइंग टू से कि पहले हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, लेकिन पहले वो होने के बाद हमें स्पिरिचुअल फ्रीडम भी चाहिए, फिर ताकि इंडिया वो गुरु की तरह, राइट। क्योंकि देखिए जो मॉडर्निटी आई तो वो क्या लाए? मैटेरियलिज्म। और जब मैटेरियलिज्म तो लोग हाई 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 हाई, मतलब एक मोटरसाइकिल, तो उसके बाद 2 मोटरसाइकिल, उसके बाद कार, उसके बाद उससे बड़ी कार, उसके बाद बड़ा घर चाहिए, उसका उससे और बड़ा घर चाहिए, उसका जमीन चाहिए। हाउ दिस मैटेरियलिज्म हैज
affected the human life. They are unsatisfied. They have become greedy. This is the context in which he is saying. He is comparing Indian civilization and the Western civilization, and saying Western civilization is very much materialistic, and deprived of spirituality. Right? Yes, sir. Right. So he talks about political freedom and also a spiritual freedom. Right? And he said for Swaraj, for self-rule, both freedom is necessary. Right? And political freedom is not, political freedom is not that it will guarantee the real freedom. Real freedom is a spiritual freedom, but political freedom is prerequisite. मतलब ये पहले चाहिए, उसके बाद हम ये कर सकते हैं. To include Vedantic philosophy in politics. अब Vedantic philosophy क्या है? Vedas. Yes, it is a philosophy of Vedas basically. So he advocated Swaraj for other region also. It's not only the spiritual freedom and political freedom, but he also talked about liberty. And liberty का भी मतलब freedom ही होता है. For example, liberty. So he, compared individual liberty with national liberty. हम बात कर चुके हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक इंडिविजुअल के लिए लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह से किसी नेशन के लिए भी लिबर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. राइट? सो कोई भी इंसान को अगर डेवलप करना है, उसको सेल्फ परफेक्ट बनना है, तो उसके लिए लिबर्टी उसकी बहुत जरूरी है. सिमिलरली अ नेशन नीड also liberty. Now, when there is a conflict between individual liberty and national liberty, then priority किसको होगा? Nation. Yes, yes. It's not like John Locke. John Locke तो individual liberty को promote करेगा, but Aurobindo is talking about national liberty. Right? So individual liberty can be sacrificed for the sake of national liberty. Are you getting my point? Yes, sir. अच्छा बताइए क्या बोला उन्होंने? सर पहले मुझे एक पॉइंट पूछना था सर. वो वेदांतिक फिलोसफी अभी जो आपने बोला था, टू यूज वेदांतिक फिलोसफी, वो किसने बोला? टू यूज वेदांतिक फिलोसफी इन politics. That is Aurobindo Ghosh. In what? Political freedom. नहीं, जो पॉलिटिक्स है ना, सिंपल जो एवरीडे पॉलिटिक्स है, उसमें वेदांतिक आइडियल्स को हमें इंक्लूड करना है. यानी पॉलिटिक्स शुड बी एज पर द वेदांतिक फिलॉसफी, वेदांतिक आइडियल्स. अभी का जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या आइडियल्स है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स है ना. Yes. है ना? There is no other, no Vedantic philosophy, no Quran Sharif philosophy, no Bible's philosophy. It is a constitutional philosophy. Right? Yes, So, sir. Now. Yes, now you explain. Yes, sir. तो बेसिकली कि पॉलिटिकल फ्रीडम, स्वराज के लिए हमें दोनों फ्रीडम जरूरी है, वो पॉलिटिकल हो चाहे स्पिरिचुअल हो. लेकिन स्पिरिचुअल को अटेन करने के लिए पहले हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए होगी. पॉलिटिकल और फर्दर ये से कि वेदांतिक फिलोसफी को हमें यूज करना चाहिए पॉलिटिक्स में. Right. और yeah, so and that would be true meaning of Swaraj. Right? Oh. When we will use Vedantic ideals in politics, that would be true meaning of Swaraj. Right? So, why it would be true ideals of Swaraj?
वेदांतिक आइडियल्स को अगर यूज करेंगे पॉलिटिक्स में तो एथिकल होगा. yes, it will teach, Vedantic ideal will teach the world about the spirituality, the spiritual power of India, right? Just a second. I'm writing it. No, just yes, you must write. You must write. Important point you must write. Vedantic philosophy will teach the world. Yes, Vedantic philosophy will teach, or Vedantic ideals will teach the spiritual power of India to the world. Yes, sir. Done, sir. Yes. Now go ahead. Yeah. Now and further he says कि for example अगर individual liberty और national liberty का class होता है तो हम national liberty को priority देंगे. Yes, right. Very good, very good. So individual has to sacrifice freedom for the sake of National nation. liberty. Got the point? Yes, sir. But even last advocated Swaraj for the reasons, for instance, ये वाला. Yes, he advocated Swaraj for also self-rule, but also for other regions like liberty. Right? So when you will exercise your liberty, when you will get freedom, you will get political independence from the foreign rule. Right? So when individual will be able to exercise liberty, when we will get Swaraj. So not only spiritual freedom, but also individual liberty was his component of Swaraj. Got the point? Yes, sir. He said Swaraj must begin at individual level. स्वराज इंडिविजुअल से शुरू होना चाहिए. अगर इंडिविजुअल फ्रीडम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो मतलब स्वराज नहीं है. भले ही मान लीजिए कि अगर लगे कि आज भारत को इंडिपेंडेंट मिल गया है, भारत स्वतंत्र है, बट इफ इंडिविजुअल इज not able to exercise freedom, then it is not a real Swaraj. Right? So Swaraj should begin at individual level. Yes, sir. Done. कोई confusion? No, sir. Okay. So clear है ना? Yes, कोई sir. confusion है तो पूछ लीजिए. Now come to थोड़ा सा है स्वदेशी and passive resistance. लिख लीजिए Aurobindo's concept of स्वदेशी and passive resistance. ये इनका तो पीस लिखा था उन्होंने, द मोरालिटी ऑफ बाइकॉट एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ सैक्रिफाइस. दैट इज हिज राइटिंग, राइट? एंड ही एडवोकेटेड फॉर स्वदेशी. व्हाट इज स्वदेशी? मतलब कि जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स ना, जैसे कि ये जो के जो भी होंगे, गुड्स होंगे चाहे सर्विसेज होंगे, वो स्वदेशी, इसको बॉयकॉट करने के लिए सेल्फ प्रोड्यूस्ड, राइट? So what we can produce by self? We have to open college, we have to open a school, right? We have to produce, you know, clothes, right? We have to set up local dispute, local mechanism to settle the dispute. College, school, health, even health. Then local court,
right? So we have to, this was the one program of Swadeshi. So this is alternative, पहले समझ लीजिए, this is alternative of the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या दे रही थी हमें? कॉलेज दे रही थी, स्कूल दे रही थी, एजुकेशन दे रहा था, कपड़े आ रहे थे वहां से, वो कोर्ट था उनका मैकेनिज्म, पुलिस थी, सब था। Yes, yes. इनका कहना था अरविंदो घोष का कि देखिए आप डिपेंडेंट मत होइए किस पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। वी हैव टू प्रोड्यूस, वी हैव टू रन अ पैरेलल गवर्नमेंट. Parallel government means we have to run an alternative government of British, and we have to provide college, we have to provide school, you know, we have to provide produce clothes, we have to set up health system, we have to set up a local court. Got the point? Yes, sir. Okay, this is the first component of his Swadeshi movement. And he was also initiator of passive resistance. What is passive resistance? Any idea? जैसे सर कोई वायलेंस नहीं करना, आप रेजिस्ट भी कर रहे हैं लेकिन Very वगैरह. right. So active resistance means आप जब वायलेंस कर रहे हैं. एक्टिव रेसिस्टेंस क्या होता है? जब वायलेंस करते हैं. यस, एक्टिव रेसिस्टेंस होता है कि जब वायलेंस आप यूज करते हैं, डेमो, यू नो, आप पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली और आप वायलेंस यूज करते हैं, रॉयट्स, डेमोन्स्ट्रेशन. हाँ, बट हमें एक्टिव रेसिस्टेंस नहीं करना है, हमें क्या करना है? पैसिव. हमें विरोध तो करना है बट हमें वायलेंस का यूज नहीं करना है, राइट? Yes, sir. We have then, and we cannot, you know, we should not follow the government directive, right? And he advocated for organized national passive resistance, and there were two components of organized passive resistance. One was constructive program, दो चीज था, आप इसको लिख लीजिएगा पैसिव रेसिस्टेंस में. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में क्या करना है? हमें स्वदेशी को यूज करना है. पैरेलल गवर्नमेंट चलना है, right? And we have to produce education, school, college, you know, our health system, कोर्ट, ये सब इंडियन होना चाहिए. दूसरा है बाइकॉट. बाइकॉट किसका? सारे फॉरेन गुड्स का. फॉरेन रूल्स का. ये दो कंपोनेंट थे इनके पैसिव रेसिस्टेंस के और विंडो के, राइट? सो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम यू कैन से सेल्फ हेल्प. एक सेल्फ हेल्प की तरह था कि हमें खुद से खड़ा होना है एक नेशन की तरह, और हमें बाइकआउट करना है ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश रूल का. Done? Got the point? Yes, sir. Any confusion? No, sir. Okay. So we have done Aurobindo. Now we will move to Gandhi. You must have heard of Gandhi. Question. Oh, sorry. Sorry? Privacy question.
Hello, are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. I'm saying question of this order windows concept of Okay. syllabus. Sorry. Let me check. Very good. Discuss Aurobindo's concept of Swaraj. Evaluate Aurobindo's notion of passive resistance. Done? Yes, sir. Okay. So now we'll move to Gandhi. Have you heard of Gandhi? Must have Yes. heard of. क्या क्या सुना है गांधी के बारे में? कौन बहुत होगा कुछ नहीं? सुना। हाँ? Yes. सर कौन होगा जिन्होंने नहीं सुना? सॉरी, क्या बोला आपने? सर कौन होगा जिन्होंने नहीं सुना था? ओके, क्या क्या सुना है गांधी के बारे में? सर ये पहले जो है वहाँ गए अफ्रीका गए थे लॉ पढ़ने, फिर ये वापस आए थे वहाँ पर, तो इनको जो है वहाँ पर चांस मिला जाने का। राइट। उनको एक पोस्ट के लिए बुलाया गया था, फिर ये उस पोस्ट पर जब वहाँ गए थे तो एक आई थिंक ये 2 साल के लिए ही गए थे, लेकिन फिर 21 ईयर तक वहाँ पर रहे थे और फिर वहाँ पर इन्होंने काफी सारे मूवमेंट चलाए हैं और काफी सारे जो इंडियंस के साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके खिलाफ काफी सारे मूवमेंट वगैरह चलाए। फिर यहाँ पे इनको या इंडिया में बुलाया गया और आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट डेट, बट जिस दिन ये आए थे उस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर आकर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑर्गेनाइज मूवमेंट चलाए हैं and then it's called institutional struggle and then we get it. Okay. Yes. Okay. Movement, So he's a well-known leader, right? Well-known means well-known. Not only India, the entire world knows him, right? So he is a global leader as well as he is a local leader. Every child of India, are aware about his action, right? Yes, sir. So he was a great freedom fighter. He was a father. He's a father of nation. His birthday celebrated as International Non-Violence Day. Okay. So we will study different concepts of Gandhi. One is non-violence. Second is Satyagraha. Third is Swaraj. Fourth is Sarvodaya. Fifth is means and ends. And sixth is rights and duties. इतना हम लोगों को पढ़ना है. The concept of non-violence. We will start. The concept of non-violence. Just 1 minute, sir. Yeah. I'm just writing these headings. Okay, you must write. Go ahead. Yes, sir. Please continue. Okay, so concept of non-violence के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? Non-violence, गांधी के non-violence के बारे में? Yes. Yes, sir. क्या जानते हैं? तो बेसिकली सर, चाहे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस किया हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया हो, या उससे पहले यहाँ पर आकर जो चंपारण सत्याग्रह ये और खेड़ा, ये सब जो भी चाहे उन्होंने किया, उनका हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहा है कि वायलेंस नहीं करना है, हमें अपनी बात उन तक पहुंचानी है
वो हम चाहे वैसे प्रोटेस्ट करके करें, धरने पे बैठ के करें, चाहे क्या होता है भूख करके करें, लेकिन Right. वायलेंस क्रिएट नहीं करना है। तो Okay. ये था उनका कॉन्सेप्ट। एक प्रिंसिपल था उनका नॉन वायलेंस, कैन वी से इट? हिज प्रिंसिपल वाज नॉन वायलेंस, कैन वी से लाइक दिस? The Gandhi's principle was non-violence, huh? It was an important principle of Gandhi's, isn't it? Yes. Why he said non-violence? Why he didn't support violence? बिकॉज एथिक को बहुत ज्यादा मानते, एथिकल टाइप के बंदे थे, तो उनको लगता क्या मतलब बिलीव कि नहीं, दिस इज नॉट एथिकली करेक्ट कि हम किसी पर वायलेंस करें। But जैसे ये भी तो कहा जाता है कि कमजोर इंसान वायलेंस से डरता है। उस समय गांधी को कहा जाता था कि he is effeminate, he is like a woman. वो बेसिकली इसलिए वायलेंस भी नहीं करते थे क्योंकि दे न्यू दिस कि अगर हम लोग वायलेंस करके चाहेंगे इन्हें भगाना तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, और ये जो बाकी चीजें करते थे उन सब से ही हो पाएगा, वायलेंस से नहीं हो पाएगा। स्ट्रांग होगा तो कर सकते हैं। Okay. Now let me tell you why he choose the non-violence, right? The he word used the coin ahimsa, right? That is the literal meaning of ahimsa is non-violence. He coined the term, right? Yes, sir. And he said, man has two, nature. Man has instinct, animal instinct, right? Animal instinct क्या है? भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, right? Yes, sir. Violence is also an animal instinct. In animal world, animal does violence. But in human being, they have also a spirit. That is human spirit. And that spirit is based on region. In the human world, the spirit is region, right? And that region tells not to do violence in order to live in a peaceful society. Every man wants live in peaceful society, ordered society. No one wants a violence. Why? Through the innate nature, right? So in animal world, there's a instinct, animal instinct. So violence is an animal instinct, and human spirit is non-violence, right? It indicates, violence indicates you are weak, right? You are irrational. The violence refers to a spirit, a human spirit, innate human nature, अंदर का human nature, right? And it is a supreme law on which society is ordered. The society is based. Got the first point? सर वो लास्ट वाला पॉइंट, इट इज सोसाइटी इज बेस्ड, ये वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। The non-violence is a supreme law on which society is based. ओके। The non-violence एक ऐसा लॉ है, सुप्रीम लॉ है, जिसके आधार पर समाज आधारित है। अगर समाज में वायलेंस नॉर्मल रूल रहता तो आदमी तो मर कर जाता। It is like animal world, right? So since human have a region, they have a spirit. So that spirit and region is called non-violence. It's not that कि हम हार जाएंगे, और he had particular philosophy. लिख लिया आपने?
Yes, sir. पहले समझ गए या नहीं समझे? Yes. समझना बहुत जरूरी है। समझे यहाँ तक? पीपीटी नहीं आ रही सर, ये जब जो भी अभी तक आपने अभी सारा इकट्ठा देंगे। पीपीटी नहीं आ रही है। पीपीटी तो शायद मुझे तो शो कर दी कि आपको शो हो रहा है। नो सॉरी सॉरी सर, वो टेलीग्राम पे नहीं भेज रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं भेज रहे। आज मैं उनको बोलता हूँ ये भेजने के लिए, ठीक है? आई थॉट कि आप ये बोल रहे थे ना कि मैं ये सारा इकट्ठा दूंगा। नहीं, मैं तो इकट्ठा ही बना रहा हूँ, भेजना उनका काम है। मैं डेली उनको भेजता हूँ। सर नहीं, वो 10-20 तक मैं भेज देता हूँ उनको। अच्छा, ये मैं आज आया। बोलता हूँ, ठीक है, आज चला जाएगा। ये समझ में आया आपको कि मैन हैज टू नेचर, राइट? वन इज एनिमल इंस्टिंक्ट, जैसे खाना पीना, राइट, ईटिंग, राइट, talking, crying. Since like similar is violence, and there is a spirit. What is spirit? Spirit is deliberation, discussion, and non-violence. reasoning. Got the point? Yes, sir. So the non-violence is a supreme law of human being, because they can deliberate, they can discuss, and they can resolve the issue. But in human world, on contrary, human world cannot do that, cannot discuss and cannot debate, but they can fight, right? So they do violence. But human world, they have a spirit, they have reason, they can debate and discussion, they can deliberate on different issue, and then they can resolve the problem, right? Yes, Through the sir. there is no space of non-violence. Got the point? Yes, sir. लिख लिया इसको? लिख लिया हाँ? सर। ओके, वेरी गुड। समझ में आ गया? यस सर। Okay. Now come to, for Gandhi, non-violence is supreme law. कह ही दिया था. It is a innate nature of human being. Why it is, non-violence is a innate nature of human being. ये अंदर का human nature है, right? To human being to desire for peace, justice, order, freedom, and dignity. Note it down. Yes, sir. It is the innate nature of human being. मैं भेज दूंगा तब लिखिएगा, अभी समझ लीजिए आराम से, राइट? ओके, हाँ। सो ये कहते हैं कि जो हिंसा इंसान को डिग्रेड और करप्ट बना देता है। हिंसा क्या करता है? डिग्रेड, बहुत ही बेकार और करप्ट बना देता है। To meet force with force and hatred with hatred only increases degeneration. डिजेनरेट कर देता है, डीके कर देता है, इंसान को एनिमल में बदल देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हिंसा, ये कहते हैं कि हिंसा, वायलेंस डिग्रेड्स एंड करप्ट्स मैन। टू मीट फोर्स विथ फोर्स एंड हैट्रेड विथ हैट्रेड, आप मुझे गाली दे और मैं भी आपको गाली दूं, आप मुझे थप्पड़ मारे मैं भी आपको थप्पड़ मारूं, ये इंसान को जानवर की तरफ ले जाता है, डिजेनरेट कर देता है, राइट? बट नॉन वायलेंस हील्स एंड रेस्टोर्स मैन्स नेचर। जो नॉन वायलेंस है वो रेस्टोर करता है मैन्स का ओरिजिनल नेचर, राइट? सोशल ऑर्डर, जस्टिस, लव, ट्रूथ। गॉट द पॉइंट? इसमें लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझिए। जो एक्स्ट्रा मैं बोलता हूं तो उस वक्त मैं खुद से लिखा दूंगा, राइट? ओके, सो हिंसा, the violence degrade and corrupts man. To meet force with force and hatred with hatred increases man's degeneration, whereas non-violence heals and restores human nature, right? Social order and justice.
गांधी कहते हैं कि we should be non-violent by our thoughts, our words and deeds. हमें अपने सोच से भी नॉन वायलेंस होना चाहिए, हमें अपने बोली से भी नॉन वायलेंस होना चाहिए, और हमें अपने कर्म से भी नॉन वायलेंट होना चाहिए. Got the point? Yes, sir. Okay. ये कहते हैं कि जब वायलेंस हेट्रेड का इंटीग्रल है, जब लोग वायलेंट होता है तो वह झूठ भी बोलता है और वो घृणा भी फैलाता है. राइट? आदमी जब वायलेंट होता है तो क्या करता है, वो झूठ भी बोलता है और वो घृणा भी फैलाता है. बट नॉन वायलेंस इज वेरी मच इंटीग्रल टू लव एंड सत्याग्रह. Got the point? Yes. Okay. He said non-violence is not a garment to be put on and off at will. Non-violence एक कोई ऐसा कपड़े की तरह नहीं है कि जब मन चाहे पहन लीजिए और जब मन चाहे उसको उतार दीजिए. No. Its seeds is in the heart. यह दिल में बैठता है non-violence. Right? It is an inseparable part of being. जो इंसान है उससे ये अलग कभी नहीं हो सकता. Non-violence. It is the highest expression of human soul, right? Greatest force and weapon of the strongest, because it is a human being, right? Animal is a weak, so violence is a weapon of the weak, and non-violence is a weapon of the strongest. Got the point? Yes, sir. Okay. He said that is a complete self-purification. Non-violence is a complete self-purification and always superior to violence. Right? Violence is the weapon of the weak, while non-violence is a weapon of the stronger. It is the only true force in human life. Yes. Anything you want to ask, you want to say? Got it, sir. It is simple. Oh, right. It's very easy, no? It's digestible. Yes. And non-violence is also political creed. It is a quality of heart, right? And cannot come by an appeal to the brain. दिमाग से अगर आप सोचेंगे नॉन वायलेंट होना, आप नहीं होंगे. दिमाग आपको कंपेल कर देगा वायलेंस होने के लिए. But it is a quality of heart. Its seeds is in the heart, not in the brain. Right? So by heart you must be non-violent. Right? आपका जो soul है वहां पर non-violence होना चाहिए. It is not a cloth. जिस दिन मन किया और फेंक दिया और जिस दिन मन किया पहन लिया. No. It needs sacrifice. It needs pain. Right? Got the point? Yes. Okay. So non-violence is not a cover for cowardice, but it is a supreme virtue of the brave. Right? Cowardice is wholly inconsistent with non-violence. जो cowardice है वो कभी भी non-violent नहीं हो सकता, वो violent ही होगा. Non-violence presupposes ability to strike, right? And in any case, violence is actually expression of the weakness and confusion. वर्ल्ड वार कब होता है? जब कंफ्यूजन फैल जाता है. Isn't it? Right? लड़ाई कब हो जाती है? जब कंफ्यूजन हो जाता है. Right? So a weak man inclined to violence act justly only by accident. एक जो कमजोर इंसान है वो वायलेंस की तरह ज्यादा इंक्लाइंड होता है. राइट? और एक्सीडेंटली अपना जस्ट एक्शन करता है. इट इज द नॉन वायलेंट मैन, राइट, व्हिच इज कॉन्स्टेंटली फेयर एंड जस्ट. एक नॉन वायलेंट इंसान ही कॉन्स्टेंटली जस्ट एंड फेयर हो सकता है, वायलेंट इंसान नहीं हो सकता. राइट? Yes, sir. So therefore, a true society, a just society, must be constructed on the foundation of non-violence.
That is his philosophy of non-violence. Got the point? Any question? Yes, Lilita? I'm not able to hear. Ji. What he said about non-violence? Yeah. So what he said about non-violence? Yes sir. So Yeah. non-violence basically गांधी is saying कि हम एक इंसान के दो इंस्टिंक्ट होते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट एंड ह्यूमन स्पिरिट. तो जैसे कि खाना, गुस्सा करना, these are animal instincts and violence too is animal instinct. ह्यूमन स्पिरिट होता है डिस्कशन करना, रीजनिंग करना एंड नॉन वायलेंस. तो बेसिक ह्यूमन स्पिरिट इज द ओनली थिंग जो इज द रीजन जो हमें बताता है कि हमें नॉन वायलेंस नहीं रहना है, वायलेंस नहीं Right. करना है, Right. सो दैट वी कैन लिव इन अ पीसफुल सोसाइटी. Right. एंड नॉन वायलेंस जो है वो बेसिकली एक सुप्रीम लॉ है जिसपे सोसाइटी, सुप्रीम लॉ ऑफ ह्यूमन बीइंग जिसपे अ सोसाइटी इज बेस्ड. Right. एंड नॉन वायलेंस जो होता है वो ह्यूमन बींग्स से का इमेज नेचर होता है. एंड ताकि वो मतलब a man desires always to have peace, justice, order, all these things. Right. And moreover he says कि मान लीजिए कि हम वायलेंस करते हैं तो उससे और ज्यादा जो है वो मैन डिग्रेड और करप्ट हो जाता है. और मान लीजिए कि हम वायलेंस को वायलेंस से ही रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन आ जाता है. ठीक है. Exactly. तो मैन का प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन आ जाता है. वो डीजेनरेशन, सॉरी, वो हाँ जी, आगे डीजेनरेशन हो जाता है. ओके. देन फर्दर ही सेज कि नॉन वायलेंस जो है वो हमारे अंदर से आना चाहिए. एंड इट इज नॉट लाइक अ गारमेंट कि हमने उसको पहन लिया और उसको फिर उतार के फेंक दिया. ऐसा नहीं होता. और अगर हम अपने दिमाग से सोचेंगे तो हमें नॉन वायलेंस का नहीं, वायलेंस का ज्यादा ख्याल आएगा. लेकिन हमें अपने हार्ट से सोचना चाहिए एंड देन विल गेट दिस नॉन वायलेंस होना चाहिए. Right. और वेपन, या लास्ट थिंग इज कि वायलेंस इज बेसिकली अ वेपन ऑफ द वीक, जो हमेशा इस डर में रहते हैं कहीं ना कहीं. फॉरवर्ड हैं वो लोग, वो हमेशा वायलेंस रहेंगे फर्स्ट इंस्टेंस. लेकिन जो डरते नहीं है, जो स्ट्रांग होते हैं, उनका वेपन होता है नॉन वायलेंस. Right. Right. Very good. Very good. So violence is, violence. What violence did? It spread hatred, isn't it? Hate. Hatred. But non-violence spread love. Love. Right? Harmony, cooperation. Yeah. Right. So non-violence is very much integral to love and satyagraha. Right? Yes, sir. It is a quality of heart. Violence, non-violence का seat कहाँ पे है? दिल में है. Right? Yeah. Non-violence gives so much of pain because in non-violence we have to sacrifice. Yeah. Right? So we have to sacrifice. That means we have to, bear pain, and we have to learn how to do that. Yeah. Right? And it is a weapon of the strongest. This is not a weapon of the weak. Okay, Gandhi ne kaha hamesha non-violence, but at one point he said use violence. When?
You know? Yes. Yes, sir. कब कहा? बिल्कुल एंड में आके जब कौन सा व्हाट वाज दैट क्विट इंडिया मूवमेंट. यस यस आई थिंक सर आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दैट नेम लेकिन बिल्कुल एंड में ही था व्हेन ही वाज आल्सो लाइक इरिटेटेड कि अब तो मतलब वायलेंस करो चाहे कुछ करो अब तो इनको भगाना करो ही या है मरो. चलो करो या मरो यस वो क्विट इंडिया मूवमेंट. मूवमेंट मैं बताता हूँ. मैं बताता हूँ. हिस्ट्री नहीं, हम फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, राइट? उन्होंने कहा कि जब when there is a same and there is a violence, दो अल्टरनेटिव हो, आपको फेस करना पड़े सेम एंड वायलेंस, यू फेस वायलेंस एंड डू वायलेंस. वायलेंस में तो वायलेंस तभी तो ऊपर बोल रहे थे कि वायलेंस हो तो उसी से रिटालिएट करेंगे तो उससे डिजनरेशन हो जाएगा. एग्जैक्टली. और लास्ट में एक्चुअली ऑफ कोर्स नॉन वायलेंस इज ग्रेटेस्ट, बहुत बढ़िया. बट एक मैंने वर्ड आपको बताया कि जो 1 मिनट कहाँ बताया मैंने, एक वर्ड बताया. ओके लेट मी टेल यू. उन्होंने कहा कि ओके नॉन वायलेंस इज बिग, नॉन वायलेंस इज ग्रेट, नॉन वायलेंस इज दिस, नॉन वायलेंस इज दैट, राइट? यस बट उनसे जब पूछा गया कि बताइए कि जब सेम हो, नेशनल सेम हो, उसको फेस करना हो और वायलेंस को फेस करना, अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं वायलेंस को फेस करूंगा. मान लीजिए आप वायलेंस नहीं करेंगे, दूसरा वायलेंस करेगा, बट वो वायलेंस सेम हो. सेम मतलब शर्म की बात हो. Are you getting my point? नो सर. That's additional I'm giving you. You don't need to borrow this in your notes, but you keep in mind that when he said, see, non-violence कीजिए, बहुत अच्छा मूवमेंट गांधी ने किया, ठीक है. आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप भी मतलब आप वायलेंस मत करो. बट मान लीजिए कि आप, योर मदर इज हियर, right, and someone has beaten up your mother, what will you do? मारेंगे वापस. Yes, then he says कि ये अगर सेम है, it is same, right? शर्म की बात है, then you choose violence. To counter the violence. Otherwise, अगर मान लीजिए एक थप्पड़ आपको मारता है तो आपको कोई बात नहीं, राइट? आप अगर कोई गवर्नमेंट का रूल तोड़ते हैं और आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं तो you have to suffer the pain, right? But if someone is if you are compelled to face the same, you don't need to do that. You need to restore violence rather than choosing non-violence. Okay, sir. Getting my point? Yes, sir. So non-violence is a political strategy, basically. And do you know that this non-violence has been worldwide recognized, the idea of the theory of non-violence? You know, Gandhi in his entire life opted non-violence and satyagraha as an important strategy to fight against injustice. Yes. And you can see the entire, there's his influence on the entire world, entire globe. For example, have you heard of Nelson Mandela? Yes, sir. Nelson Mandela opted Gandhian strategy of non-violence and satyagraha when he, opposed apartheid in South Africa. Got the point? Yes, sir. Martin Luther King Jr. was also great votary of Gandhi's idea of non-violence, and he used in the civil rights movement in America.
राइट। जब मार्टिन लूथर को असैसिनेट कर दिया गया, गांधी was also assassinated, Martin Luther King Jr. was also assassinated. And you know, when he was assassinated, then in the New York Times, one वैसे कार्टून आता है ना, द हिंदू में भी कार्टून आता है, इंडियन एक्सप्रेस में कार्टून आता है, इसमें आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टून आता है, यू नो कार्टून आता है, पॉलिटिकल कार्टून, राइट। सो एक कार्टून आया था, उसमें गांधी और मार्टिन लूथर बात कर रहे थे, राइट। यस, उस कार्टून में गांधी और मार्टिन लूथर को एक साथ में दिखाया गया था, और मार्टिन लूथर कह रहे थे कि गांधी, आई ऑप्टेड योर स्ट्रैटेजी एंड आई वॉन। Gandhi replied that they think that they have killed you. Are you getting my sense? The sense? Last line, they think that they have killed you. Gandhi replied to the Martin Luther King that the white, the Americans thinks that the assassinator thinks that they have killed you. वो सोचते हैं कि तुम्हें मार दिया, but you will not die, because such person never dies, because such person has developed the shaped the certain idea. Gandhi killed, but not Gandhi's idea. Okay? Yes, sir. If you see the green politics, have you heard of green politics? Not yet. No? No. Okay. Green politics is not environmental politics. Green politics is a politics is based on Gandhian idea. So Gandhian idea is, जो green politics का central idea है वो है decentralization. Gandhian idea पे है। दूसरा freedom, तीसरा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, फ्रीडम हो गया, और तीसरा है, 4 आइडिया है बेसिकली इसका, डिसेंट्रलाइजेशन, फ्रीडम, environmental friendly. It means local production. अभी बताते हैं आपको। ऐसे 4 आइडिया है। And you know there is a Green Party. Have you heard of Green Party? No. Green Party is जर्मनी में है, ब्रिटेन में है, स्विट्जरलैंड में है। ये सब एक्चुअली मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं है, बट मेन स्ट्रीम पार्टी को इन्फ्लुएंस करती है, राइट। सो यू हैव टू बी इन्वायरमेंटल, यू हैव टू, हमें बड़े इंडस्ट्री नहीं चाहिए, हमें छोटे इंडस्ट्री चाहिए, हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, हमें इतना सेंट्रलाइजेशन नहीं चाहिए, राइट। सो ग्रीन पार्टीज एजेंडा इज बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडिया। Gandhian ideals. Got the point? Yes, sir. Okay. So that is the importance of Gandhi, right? Have you heard of a book, The Small is Beautiful? What, sir? Small is Beautiful. The book? No. No? No. No. Okay. Small is Beautiful is a wonderful book written by, नाम भूला रहा हूँ, आप लिख, Small is, यहीं से एनवायरमेंट मूवमेंट शुरू हुआ था, इस किताब से, इस किताब में, एंड दे ऑप्टेड गांधीयन आइडिया। थोड़ा सा गूगल पे देख लीजिएगा किसने लिखा है, नाम मैं भूला रहा हूँ, आई एम मिसिंग नेम ऑफ दैट ऑथर, Michael, no, I'm forgetting his name. Just you search his name
and his idea was based on Gandhi. Okay. Book is based on Ideas of Gandhi. sorry. No, I was just completing the sentence. Our book is based on Gandhi's ideas. Yeah, the book is based on Gandhian ideas, right? Even you see the environmental movement, not in India, around the world, is based on Gandhi idea of non-violence, right? Chipko movement. Have you heard of Chipko movement? Yes, sir. कहाँ पे हुआ था ये चिपको मूवमेंट? To protect tree. Yeah, no, protest tree. To protect tree. Yes, 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 yes. To protect tree. So वो लोग गले लगा लेते थे, महिलाएं लोग, हाँ, बूढ़े लोग, सारे लोग. कहाँ पर हुआ था ये? उत्तराखंड में. हुआ था ना? So उनका जो, जी बताएं. सर आई एम सेइंग कहाँ हुआ था वो ध्यान में आ रहा. उत्तराखंड, 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 गढ़वाल में. ठीक है. उत्तराखंड दो भागों में बटा हुआ है, गढ़वाल एंड कुमाऊं. गढ़वाल रीजन में हुआ था. ओके. तो यहाँ पर गांधीयन आइडिया को यूज किया गया था. गीता पढ़ना, कीर्तन भजन करना, गले से लगा लेना, पेड़ को काटने ना देना, नॉन वायलेंस, बिल्कुल नॉन वायलेंस, गांधीयन आइडिया पे ये मूवमेंट हुआ था. Got the point? Yes, sir. Okay, so now come to the International Non-Violence Day. The birthday of Mahatma Gandhi is celebrated as International Non-Violence Day. कब हुआ था घोषित, पता है? सर यही अभी पता चला कि इंटरनेशनल 2007 में United Nations has declared that the 2 October, the birthday of the great soul, pious soul, Mahatma Gandhi, will be celebrated as International Non-Violence Day. Okay, sir. Right. The United Nations says, you know, I visited the United Nations, and then there's one beautiful sentence was written there. मैंने simply उसको quote कर दिया है. But that say the name of Mahatma Gandhi transcends the bonds of race, religion, and nation state, has emerged the prophetic voice of the 21st century. The world remembers Gandhi not just for his passionate adherence to the practice of non-violence and supreme humanism, but as the benchmark against which we test men and women in public life, political ideals, and government policies, and the hope and wishes for our shared planet. ये मैंने यूनाइटेड नेशन से उठा लिया था. How the Gandhi is, you know, it's not bounded by a national territory, Indian. Gandhi is a global. Gandhian idea is global, right? जहां जहां वायलेंस है, right, where that वहां गांधी is relevant. अभी जब इजराइल एंड फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड देयर इज अ ग्रुप इन विद इन द इजरायली फिलिस्तीनी, दे यूज गांधीयन आइडिया to protest against the, you know, Israel. Fine. Yes, sir. Okay. Any query? Anything you want to ask? या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? Do we need to write this line, this quote, or this is just for our No, just for your you know, your for your knowledge, kind of knowledge. Nothing, no need to write. All are for your information. Your answer should be based on question.
जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आंसर करेंगे आप। ठीक है? ओके। नाउ देयर आर थ्री मेन कैटेगरी ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। जो नॉन वायलेंस का थ्री कैटेगरी है, एक तो है प्रोटेस्ट एंड परसुएशन, इंक्लूडिंग मार्चेस, विजिल्स, ये सब करना है, प्रोटेस्ट एंड परसुएशन। सेकेंड है नॉन कोऑपरेशन, एंड थर्ड इज नॉन वायलेंट इंटरवेंशन like blockades, occupations, picketing. These all three are strategy of non-violence. Got the point? Yes, sir. Okay, now move ahead. Now we are the second point, second idea of Gandhi is satyagraha. Have you heard of the word satyagraha? सत्याग्रह देख के, हेडिंग देख करके बस 2 मिनट छोड़ दीजिए, 2-4-5 मिनट बातें कर लेते हैं, फिर 2-4-5 मिनट लिख लेंगे, और इससे के बाद आज का क्लास मैं यहीं पे सत्याग्रह पढ़ाने के बाद खत्म करेंगे। और कल हम इनको गांधी के सारे आइडिया जो रेस्ट बचे हैं, स्वराज, सर्वोदय, मीन्स एंड एंड्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, उसको खत्म करेंगे। ओके? Yes, sir. ओके, सो व्हाट इज सत्याग्रह? क्या मतलब निकलता है वर्ड से सत्याग्रह? सत्याग्रह, पाथ ऑफ ट्रूथ। फिर से तो सत्याग्रह, पाथ ऑफ ट्रूथ। No, satya means truth, yes. And agraha means insistence. आग्रह करना किसी से। Yes, किसी से आग्रह करना, insistence, insist करना किसी को। Yes, है ना? Yeah. So satyagrah was a very much a non-violent political action in Gandhi's life. कोई भी काम करते थे उसमें ये सत्याग्रह को यूज करते थे नॉन वायलेंस के साथ, राइट? सो सत्याग्रह वाज अ नॉन वायलेंट पॉलिटिकल एक्शन इन द Gandhi's life. He opted non-violent political action in South Africa against injustice done by the British Raj. जो आप बोल रही थी कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह यूज किया, प्रयोग किया सत्याग्रह का। ठीक है? वहां पर क्या कर दिया था, वहां की जो मैरिज था उसको इलीगल घोषित कर दिया था। So he won a satyagraha in the South Africa, and then he came back to India, and the entire life he remained very much adherence to the non-violent satyagraha, right? yes, sir. In his major life, मेजर जो गांधी के लाइफ में 4 उन्होंने पॉलिटिकल एक्शन किए, मेजर। एक तो था चंपारण सत्याग्रह, जो पहला सत्याग्रह था, दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तीसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चौथा क्विट इंडिया मूवमेंट। बोलेंगे सर खेरा भी तो था, सर नॉन खिलाफत भी था, खिलाफत था ना, खिलाफत मूवमेंट भी था, बट ये 4 मेजर थे। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ये 4 ही केवल थे, ये 4 मेजर थे। चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या नमक सत्याग्रह, और क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर? Yes, sir. Any confusion, any query? No, sir. Okay. Just 1 minute, sir. I'm just coming. Okay. हाँ जी पापा, मम्मी कभी होगी पता नहीं।
Yes, sorry sir, actually my papa was there on my phone. He was Okay, no calling. issue. No issue. Done? Yes, sir. So should I move ahead? Yes, sir. To see the few pictures I have put about the Gandhi. See the Champaran movement, how he was popular, right? He came to India in 2015, right? And he launched Champaran movement on the request 2000. of 1915. Sorry, 1915. Yes, and he launched movement Champaran movement when कब 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 उन्होंने लॉन्च किया था? देखिए 2000 में लिख रहा हूँ, right? 1970, right? So Champaran movement, this is non-cooperation movement, and the Dandi March, Satyagraha, and then you see the how he was a mass leader, right? Man, woman, आजकल भी इतनी महिलाएं रोड पे नहीं आती किसी रैली में, आती है क्या? No. Gandhi was the person who really, transformed the Indian movement from an elite to a mass movement, isn't it? Yes, he was a So leader, influencer. yes, yes. So his strategy was satyagraha. आपको ये मूवमेंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा है क्या? चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हैव यू रेड? Yes, sir. अच्छा, पढ़ा नहीं है. पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा. पढ़ा है सर. पढ़ा है? ओके. नहीं पढ़ा है तो अगर पढ़ा भी है तो फिर से पढ़िएगा इसको. ओके, रिलेट करके. एंड किस किताब से पढ़िएगा? आप पढ़िएगा, उस दिन मैंने कौन सा किताब बोला था? शेखर बंदोपाध्याय. अगर आप किताब पढ़ें या बंदोपाध्याय, अगर किताब नहीं है तो बिपिन चंद्रा से, राइट? ओके. या राजीव अहिर का जो किताब है स्पेक्ट्रम वाला हिस्ट्री, वो भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड्स. बट शेखर बंदोपाध्याय इज वेरी मच गुड. शेखर बंदोपाध्याय और बिपिन चंद्र अगर आपने पढ़ लिया तो सारे इंफॉर्मेशन एक ही जगह रखना है. नोट्स इसलिए जरूरी होता है ललिता कि जैसे मान लीजिए कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे बता रहे हैं, ठीक है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे सारा इंफॉर्मेशन हमारे आधे पेज के अंदर, मैक्सिमम आधे पेज के अंदर सारा होना चाहिए, सारा इंफॉर्मेटिव जो आपको पीटी में काम आएगा. Right? Anyway, now come to the Satyagraha. What is Satyagraha? Satyagraha was, a strategy along with non-violence in his political action, political movement, right? And there were 4 salient features of Satyagraha, right? 4 salient features of Satyagraha. One was truth. For Gandhi, truth is God, right? The fight for truth, right cause. Satyagraha was a fight for truth. That means right cause. Okay? Yeah. So, of course, undoubtedly, prayer requires a living faith in God. He said, any prayer, any request requires a living faith in God. And successful Satyagraha is inconceivable without that faith. कोई भी सत्याग्रह में हम तब तक सक्सेस नहीं हो सकते जब तक हमें गॉड में फेथ ना हो, ट्रूथ में फेथ ना हो. गॉड मीन्स हियर ट्रूथ. फाइन? Okay. So he says God may be named in a various name. God may be called through the various names, right? Yes. Okay. So the God is law and law giver. दोनों जब एक साथ मिल जाता है तो वो गॉड बन जाता है.
right? He said independence means freedom, means not political freedom. Freedom means Ram Rajya. What is Ram Rajya? Ram Rajya is, it's not only political freedom, it is also economic freedom, it is also moral freedom. Got the point? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Okay. So what is independent means? Ram Rajya. Ram Rajya means kingdom of God on earth, right? And it is a independence Of in politics, moral, yes, moral, economic, and political. Political freedom means, you know, removal of control of British Raj, British Army. Political freedom means removal of British Army, British Raj. Got the point? Yes, sir. Economic freedom means removal of British capitalism and indigenous capitalism. He was very much critical to industrialization. Right? So economic freedom means removal of British capitalism and the indigenous capitalism. He was against capitalism. He was against industrialization. He was against machine. Not machine per se, but heavy machine. Okay. Got the point? Yes, sir. And moral freedom means Swaraj. Moral freedom means Swaraj, self-realization. Got the point? Yes, sir. The second component, second element of Satyagraha is love. Right? So Satyagraha is never vindictive. It doesn't believe in destruction. It believes in conversation, debate, discussion, logical reasoning with passionate love and truth. Satyagraha is never vindictive, right? It doesn't believe. It believes not in destruction, but in conversion, debate, discussion, logical reasoning with passionate love and truth. Got the point? Yes, sir. Okay. Non-violence. The third important component of Satyagraha is non-violence. Non-violence is the supreme virtue of the brave. It is the first law of religion. Non-violence is impossible without humility. It needs sacrifice, capacity to bear pain. Got the point? Yes, sir. So non-violence is the third element. Fourth element is Satyagraha is not a passive resistance. It is not a passive resistance, but an active involvement, right, for the right cause with truth, love, and non-violence to resolve injustice. Passive resistance is not a, Satyagraha is not a passive resistance. It is an active involvement for the right cause. Okay, with truth, love, and non-violence. तो पैसिव रेसिस्टेंस क्या है जो हम बात कर रहे थे अरविंदो के बारे में? यस, कि हमें एक्टिव नहीं होना है. गांधी कहते वी हैव टू बी एक्टिव, राइट, एंड एक्टिव इन्वॉल्व फॉर द राइट कॉज विथ ट्रूथ, लव एंड नॉन वायलेंस. दिस इज a three force. Truth, love, and non-violence is a three force, right? That should be used in Satyagraha. Yes, yes, बोलो. तो मतलब वो बोल रहे हैं कि एक्टिव होना चाहिए. हाँ, पॉलिटिक्स में जहां भी इनजस्टिस दिखे
एक्टिव रहना चाहिए, बात करना चाहिए उनसे, डेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सच्चाई, active का मतलब violence तो नहीं है ना सॉरी, सर? एक्टिव मीन्स यहाँ पे वायलेंस तो नहीं है ना? नो 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 नो, एक्टिव तो विथ इन्वॉल्वमेंट विथ लव, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ओके, with debate, discussion, conversation, deliberation. Got the point? यस सर, Okay. And the fifth component of Satyagraha is justice. The, the, the first and foremost reason to do Satyagraha is to establish justice. Gandhi said that rage against voice of injustice. Satyagraha is moral duty against all kind of injustice. सत्याग्रह इज अ मॉरल ड्यूटी. गांधी कहते कि कहीं भी अगर इनजस्टिस हो रहा है, इट्स अ मॉरल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू लॉन्च सत्याग्रह. फाइन. यस सर. मतलब हमें पैसिव नहीं होना है, चुपचाप नहीं बैठना. ये नहीं है कि हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हो रहा है सोसाइटी में इनजस्टिस, लेकिन हम तब भी चुपचाप बैठे हैं. वी शुड नॉट बी पैसिव इन दैट. चुप नहीं रहना है हमें. वी हैव टू बी इन्वॉल्व्ड, या राइट, विथ लव, ट्रूथ एंड सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, राइट. सत्याग्रह मीन्स हमें मूवमेंट लॉन्च करना है, हमें एक्शन लेना है, उसमें हमें सत्य को अपनाना है, प्रेम को अपनाना है और अहिंसा को अपनाना है. और हमें क्या एस्टैब्लिश करना है? न्याय, जस्टिस को एस्टैब्लिश करना है. Got the point? यस सर. Okay, so that is the Satyagraha, right? So his all entire movement, he launched Satyagraha, whether it is Champaran movement, whether it is non-cooperation movement, civil disobedience movement, Quit India movement. He was a champion of Satyagraha. Fine? यस सर. Any doubt? सवाल दे दूं? Any doubt? Discuss Gandhi's idea of non-violence. That is the first question. Hello. Yes, sir. Then, sir. Discuss Gandhi's idea of non-violence. Yes. And evaluate Yes. Gandhi's idea of Satyagraha. Fine. Yes, sir. So I'll stop here and we'll see you tomorrow. Okay, sir. Thank you, sir. Most welcome.